Hello and welcome to episode 11 of Preparation Parley. Let's get to the question straight away. The first relevant question sent over was, how many optimum number of mocks and sectionals to plan in the remaining days? An average number that I would recommend is every week you should be going through 2 mocks or 1 mock and 1 sectional of each of the 3 sections. At least that much should be covered. Now, this recommendation comes with a lot of caveats. The first caveat being, it depends on how much time you have to study, available to study, and what level of plan you're at. So, somebody who is only preparing for CAT, is not doing a job, is not otherwise engaged, is not attending college, not doing assignments there. Of course, you would have more time, so you can perhaps have a higher number of attempts in terms of mocks and sectionals. Then the other caveat that you have to take care of is the number of mocks and sectionals you take is not as important as how much time do you invest in ensuring that you are adequately analyzing them. 10 mocks, like thoroughly analyzed, is much better than 40 mocks taken, but analysis is dicey. And when I say thoroughly analyzed, what I mean by it is maintaining a record of good questions from those mocks, making sure that if at all some error was made at the time of solving, that error is identified, identifying your own biases about, I will not attempt long questions, I will attempt short questions, then getting rid of those biases, because you need to ensure that in the exam you don't miss out on anything useless. Identifying what works for you, identifying what doesn't work for you, in terms of you want to do RCs first, you want to do DILR first, you want to do RCs first, you want to do VA first, what works for you. Implementing the round strategy within DILR, identifying certain question stems or recording styles that you were previously unaware of, but now you can potentially work with because you have been exposed to such questions. So optimum number varies significantly depending on what level of prep you're currently at. Say for somebody who is fairly well prepared, they're repeating, they're fairly well prepared. Last year they had 98 plus something percentile. That person should ideally be taking 3 mocks per week. You don't have to do revision. You don't have anything else to do. You take 3 mocks per week, not a problem at all. Then again, this advice would not be applicable to somebody who has started his preparation in August. If you start taking 3 mocks per weeks, either you're not analyzing the mocks appropriately. Anyway, right now for you, taking mocks would not be appropriate, because by now, if you started preparation only in August, you would not have covered enough syllabus for you to have a fair reflection of your skills being represented by the score or the result that you get. The other caveat that I haven't mentioned so far, regardless of whatever mocks and sectionals and things you take, don't worry about score. Whatever scores you get, for all the wonderful mock test series that exist out in the market, and that includes my own, which is offered to my kids only, for whatever wonderful mock test series exists in the market, none of them are a good replica of what the CAT does, because what the CAT does is also not certain. Sometimes the CAT would, in the CAT paper, you would have a very easy QA section, but a relatively tougher LRDI section. Sometimes in CAT, you would have a very, very tough VARC section, but a relatively easier DILR section. We don't know what sort of paper CAT throws at us. So what we have to ensure is that we are prepared for all eventualities. Do not get bogged down by, oh, मेरा score इतना आया, मेरा 63 score आया, मेरा 76 score आया, या मेरा 112 score आया. I had a kid recently जिसका IMS में कुछ रैंक वैंक आ गया है. IMS के मॉक में टॉप 10 रैंक्स में कुछ आ गया, 112. I was extremely क्या बताएं, he was saddened by the fact, not saddened, he was happy that he was rank 8, toppers list पे नाम वाम आ गया and everything.
एंड बट 112 था उसका टोटल. बट वहीं पे ब्रेकअप में ही हैड 61 इन VARC अलोन, 61 or 63 in VARC alone, which was amazing score in VARC. But then that also means in quant and DILR, he had definitely not maximized, and the subsequent discussion led to that outcome and insight. Scores are great for 2 seconds, but then you have to move on to the action based thing. Because remember, your mock scores, nobody would remember. Everyone would remember your actual CAT score. You would remember your actual CAT score. Even if you ask repeaters what were their mock scores from last year and everything, it is hard, it is very unlikely they would remember. But what they will definitely remember to the decimal place, their CAT percentiles. So mocks are precisely that. They're simply mocks. They are not a judge of how smart you are. Additionally, mocks are not really a very, very valid reflection of your knowledge skill, especially mm, when, with all due respect, a lot of mocks are designed and created by people who are not really in tune with what CAT asks. So, a very popular opinion among the aspirant community is if the test is difficult, this is CAT level. If the test is not difficult, it is not CAT level. Conveniently ignoring the fact that there is nothing defined as CAT level. So, don't get too happy with an extremely good score. Don't get too sad with an extremely bad score. Simply focus on, okay, what can I learn? What are the areas I can improve at? So that is my recommendation. How many mocks? I've given you the average number because that is what people seek all the time. But there are lots of factors associated with it, which makes that answer a little suspect. Okay, the second question. In QA, max I'm able to solve 8 to 9 question, and I have completed whole syllabus and also been revising on regular basis. Okay, so there are two layers to this. And in QA, a lot of people face this trouble. Not just QA, even VARC, in DILR, everywhere they face this trouble. See, CAT is an intelligence test. CAT is testing whether you can utilize your brain in that pressurized environment when you're sitting for the exam and everything. Far too often, people fall into the trap. I know this kid who has sent the second question, and I know his tendencies, and I think this is something that is valid for a few other people as well, and therefore I've included. His particular tendencies are, if you give him a question, instead of focusing on the question, what is there in front of him and what can be done with it, this person goes into an entirely different loop. That loop being, okay, what topic is this question from? If I go back to that, let's say this question is from arithmetic. If I go back to the arithmetic classes, did we do a question of a similar type? If we did, okay, this formula is applicable. There are two levels to that also. If we did, and he remembers that we did, then he will solve that question. If it is a new question type that he has not previously seen, he will run away from it. He will not attempt it. After the test, he's able to solve many more questions, because now outside of the test, without the pressurized environment and him not trying to remember what had happened in class, now he's giving the question due attention, which is what his particular problem is. Instead of solving the question in front of him, this person turns into, okay, what happened in class and what should I have done and what would happen? Yeah, don't fall in. See, as much as I would want to all things get covered, every particular question type gets covered, that is impossible to do. Say something like something as in as using in a question, if you see, how do I place it? What question? A very simple question type, very, very simple question type. Maybe you'll also understand. There is vessel A and vessel B, equal volumes. Vessel A has milk, vessel B has water. I take some portion out of A and put it in B, and I take some portion out of B and put it in A, such that the ratio of milk in the first vessel and ratio of water in the second vessel
Ratio of milk in the first vessel and water in the second vessel turns out to be 1:1. Turns out to be 1:1. So what is the maximum ratio of milk that would have been taken out from the first vessel to the minimum ratio of milk that could have been taken out from the first vessel? Hopefully you can see ratio. If I say that would be a problem. This question is a problem, but can you see here? If I'm taking something out of A and putting it in B, and then I'm taking something out of B and putting it in A, and now I have the ratio of milk and water here is equal. One extreme case would be I have taken out all the milk from the first vessel and put it in the second vessel. And now when I shift something, half of it to the first vessel back, of course, ratio of milk and water would be identical now. This is one extreme. The other extreme would be I don't shift anything at all, zero altogether. I don't shift anything at all. And there now also ratio of milk and water would be identical in both the vessels. So the final version of the question should not be what is the ratio of maximum and minimum. The final version of the question is what is the difference between the maximum amount of milk taken out from A and minimum amount of milk taken out from A for the storyline to be valid. Now this cannot get covered in class because this is simply presence of mind. You have to look at extremes, whether you're taking out all milk or whether you're not taking out all milk. If you try to fix every question to a template and the templates that you're aware of, if you try to fix everything to a template, then solving QA questions would become difficult because now you're turning this IQ test into an exercise of memory. Okay, this is how this should be done. This is how this should be done. The ability to solve 8 to 9 questions. Also, with all due respect, this is also sort of a humble brag. There are people who are not able to do 8 to 9 questions right now. So you are much further along. See, 8 to 9 questions in CAT, 24 to 27. This would be upwards of 90ish percentile to the best of my recollection. This would be upwards of 90 something percentile, which is more decent than a lot of people. Yet, what I'm saying is you have to train yourself. Focus on the question at hand. Don't worry about what was done in class. This is the first worry. This is the first for this particular candidate. I'm sure this is the trouble. Now, more generically, some people also have this talent. They feel they have completed the whole syllabus. They feel they are revising very regularly. But a lot of content that they're going through is not logical. It is heavily formula based. I, for one, hate formulae. And I, for one, understand the limitation of formula. Within formula, formulae work only in certain constrained limited setups. Formulae are not bad. Formulae are awesome. But you should know how the formula came into being so that if at all one of the constraints is tweaked, you're still able to work with that formula by tweaking the formula appropriately. Let's say if I ask you, there are n lines, what is the maximum number of intersection points that they would have? Most people would be able to tell me NC2. N lines, number of intersection points that they have, NC2. But if I tweak it and tell you there are 18 lines, 6 of which are parallel, what is the maximum number of intersection points that these lines would have? You should be able to understand that for those 6 lines, you will not have intersection points because they are parallel. So your answer now would be 18C2 minus 6C2. Out of every pair, out of those 6 lines, 6C2 pairs that you're getting, they have to be removed from the total. But then this should come as an idea. We're doing 6C2 because any 2 lines that you take can have an intersection point. But if it is a parallel line, it will not have an intersection point. How many pairs of parallel lines can you take? So tweaking along the way, for that to happen, you should know how a formula came into being, why a formula is being used at all. If you can get to that level, then your concerns would be addressed a little more. If at all, it is heavily, let's call it formula based, you only remember things. Stuff like extension of the Apollonius theorem 4 times, 4 times the sum of squares of medians is equal to 3 times the sum of squares of sides.
you know this formula precisely, it is highly unlikely. And the areas in which you will get most trouble if you have done your studies very formula heavy based is number theory, is geometry and algebra. Because anyway in arithmetic, even though you know formula, because arithmetic the questions are such that you're able to imagine yourself in that situation, you still fight your way through it. But in algebra and geometry and number system, if your study has been extremely formula centric, that would be a problem. So this is more generic advice. Last thing that I would say, if you're able to solve 8 to 9 questions, it could also be on account of the fact that you're using your pen far too much. A lot of people, when they get a question in a mock, the first thing they do is, okay, Ram speed, Shyam speed, Zoha speed, whatever people, everything they write down in the question. And then when they get to solving, then they write all the steps. Please, people, realize this is not 12th board exam wherein you'll be given marks for your steps. You'll be given marks for the final answer. So you have to train yourself wherein you're not writing everything down. You're not recording every piece of information given in the question before you even start solving. You can save a lot of time. You can save a lot of heartburn by simply reading through the question. Only if you know the path forward, only then start solving. And if you've started solving, So, and the practice for this is built even when you're practicing outside of mocks, outside of tests, whenever you're solving questions. When you look at a question, first give it a rating, whether this is round 1 worthy, whether this is round 2 worthy, whether this is round 3 worthy. First, give it a rating. After you've given it a rating, only then get around to solving it and then see how often your rating of the questions is correct. Additionally, please don't keep certain topics as, okay, ye to nahi karna hai. Too many people I see, PNC questions, they will definitely leave, or number theory questions, they will definitely leave. See, if you're going to be selective in the questions that you are going to attempt in the exam, of course, the results that you're going to get are also going to be curtailed. And then you cannot claim, nahi, mere ko zyada sawal karna tha. Bhai, tumne, you have made sure that you are going to study fewer things, no? So the advice that we get, or I see on a lot of prep groups, arithmetic kar lo, and algebra kar lo, and geometry kar lo. पीएनसी छोड़ रहे हो तो समझना तुम अपना स्कोर कम करने में ठीक है, तुम्हारे लिए स्कोर कम करना इज एक्सेप्टेबल. ये नंबर थ्योरी छोड़ो तो तुम्हारा स्कोर कम करना इज एक्सेप्टेबल. एंड इफ यू आर ओके विद द आइडिया कि स्कोर कम करना इज एक्सेप्टेबल, तो ठीक है, तुम्हारा स्कोर कम आएगा, फिर दुखी मत होना. बेसिकली द प्रॉब्लम इज too many people want the minimum effort to get the best results. इतनी एफिशिएंट दुनिया चलती नहीं है. यहाँ का एग्जाम, स्पेशली कैट जैसा एग्जाम, where it is a comparative score that you get, you cannot influence the effort of the other participants. So you have to make sure that from your end, you are putting in the maximum effort. If you're not putting in the maximum effort, then later on, whatever happens, you will always have regret. That is the worst emotion in the world. See, there are two bad emotions in the world. One is regret and the other is pity. Anger and hatred and everything else is fine. You can be legitimately angry in some position, in some situations. You can be legitimately hateful towards other people in some situations. But having regret, because regret is a form of self-hating, wherein you feel, yaar, hum ye kar sakte the. See, if you are walking on the road and a car has come from the wrong side and hit you and gone away, you will not have regret. You are only going to be angry at that car that was driving recklessly, because there was nothing in your control that you could have done. But if you don't prepare for an exam that you are planning to take, that you are saying is very important in your life, then that regret will stay with you and your sense of self-worth, self-esteem will go down. मत करो ऐसा, थोड़ा पढ़ लो. Acha, this is the second question. I will wrap it up with simple one line. If you are able to solve 8 or 9 questions, lage raho. Right now, focus karo. We are not making judgment errors and we are not ending up writing a lot of stuff. उससे भी significant improvement देखने को मिलेगा. Okay, the last thing, discussion on action plan for the upcoming 3 levels. The 3-tiered plan based on levels.
I would need the mm, screen sharing ability for that. My handwriting is absolutely horrendous, and I don't think anyone is unaware of that because we have seen my videos. No, okay. So 3-tiered plans. I the first group of people who started in August. Started in August or September. See, it's not. I personally don't want to take money from people who are starting this late because most likely your aspiration and your result will there will be a mismatch, and I don't want to be in that situation. But yes, some people will succeed despite starting so late. When I say succeed in terms of their definition, whatever they define as success. For somebody, the success is getting 90 percentile. For somebody, success is getting 99.8 percentile. Some people will succeed depending on what levels they are at and how much effort they've put into their life. People are starting in August and September. एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, देर इज फार टू मच एंटाइटलमेंट. हमने देरी से भी चालू किया है, लेकिन मेरे को कवरेज भी हर टॉपिक का बेसिक टू एडवांस चाहिए. और मेरे को मतलब मेरे को मॉक्स भी बहुत सारे देने हैं, और मेरे को सेक्शनल्स भी बहुत सारे देखने हैं, और मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में समझने हैं. नहीं हो सकता. मेरे को सारे आईएमएस के मॉक्स और सीएल के मॉक्स और टाइम के मॉक्स भी एक्सपीरियंस करना है, और मेरे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, और मेरे को सब कुछ करना है. Please understand, because you've started late and you have decided to start late, there are going to be portions on which you would have to compromise. Now, the portions that you have to compromise, there are two parts to it. One is the basics building. The next part is test taking. People are willing to compromise on basics building, and for some reason, especially people who started late, even those who started early, they have this tendency, but especially people who started late, there is no elixir, there is no panacea that ensures कि यार इतना कर लो तो सब चल जाएगा. There are wonderful questions like uh, कौन सा uh, कौन सा यूट्यूब चैनल से एलआरडीआई करेंगे तो सारा एलआरडीआई क्लियर हो जाएगा. भाई, अगर किसी का यूट्यूब चैनल से एलआरडीआई क्लियर हो रहा होता, यूट्यूब चैनल का एक्सेस पब्लिक है, हर किसी के पास है. यूट्यूब चैनल से तो क्लियर होता नहीं है. इट ओनली गेट्स क्लियर्ड व्हेन यू पुट इन द एफर्ट. प्लीज बेसिक्स बिल्डिंग को कॉम्प्रोमाइज मत करना. बेसिक्स बिल्डिंग को कॉम्प्रोमाइज मत करना. एट द सेम टाइम, you have to ensure that you do not have the bandwidth of going into extreme depth of every topic. You would not have time for going into extreme depth of every topic. यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, एंड टेस्ट टेकिंग में सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. In an ideal world, people who are appearing for CAT should take upwards of 35 to 40 mocks. That is in addition to all the sectionals and all the other tests that they take. But in your case, because you're starting so late, you you would have to significantly compromise here, and then maybe get to 10 to 12 mocks, but only get to mock testing when more than mm, out of the 5 topics in quant, number systems and arithmetic and geometry and algebra and modern math, out of these 5 topics, at least 3 are done. Only then start taking mocks. Prior to them, when you're taking mocks, you're simply throwing a dart at a board with a blindfold on without realizing whether there is a dartboard or not. You're simply throwing stuff. If it sticks, it sticks. If it doesn't stick, then you get saddened, because however much people may tell you scores are irrelevant, people love scores and people are emotionally impacted by scores. बट ठीक है, बेसिक्स बिल्डिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. थोड़ा कॉम्प्रोमाइज का मतलब है practice a lot of questions. You would have to cover your basics wherever you're enrolled at, wherever you're doing classes.
क्लास वास आपको देखनी है, बट उसके बाद यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान कि भाई नहीं अभी हम इसी का प्रैक्टिस करेंगे, नहीं अभी हमने नंबर सिस्टम किया तो अभी हम नंबर सिस्टम करेंगे, अभी हमने अरिथमेटिक किया तो हम अरिथमेटिक करेंगे. You would have to jump to other topics and start practicing them simultaneously with whatever limited knowledge you have. Practicing. See, I'm saying you jumping and practicing them randomly is okay. You taking mocks and treating your mocks as random exercises is not okay. थोड़ा सा आपको वहां पे जंप मारना पड़ेगा. It would not be built up as beautifully as it would for people who have done it for a longer period of time. But चलेगा, करना पड़ेगा. Additionally, ये मतलब यू हैव टू अग्री, डीप डाउन यू हैव टू अग्री, हाँ मेरी कामों में दिक्कत है. आई विल नॉट बी एबल टू कवर इट एज कॉम्प्रिहेंसिवली एज पीपल हु स्टार्टेड अर्लियर. इफ एट ऑल यू हैव द माइंडसेट नहीं अब अभी से, आज हम सितंबर 9 है, आज हम सितंबर 9 से चालू करेंगे कैट की तैयारी, एंड आई विल हैव एज मच कवरेज एंड एज मच पोर्शन कवर्ड एंड एज डिटेल्ड advanced ideas as somebody who has been doing it, let's say, since January, or somebody who's been doing it since February. That is very very unrealistic to expect. And उसके बाद all that will get you is regret. अपने को पता है थोड़ा सा काम कम होगा, अपने को पता है थोड़े से मॉक्स हम कम देंगे, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या मेरा मिस हो रहा है, ensure that the parts that you're doing, the portions that you're doing, they are being done with the utmost quality. मतलब यही समझिएगा, somebody who studies three topics with great concentration and great understanding, instead of getting flustered, instead of running around on telegram groups and asking for मेरे को ये क्रैश कोर्स का वीडियो दे दो, मेरे को ये 1000 का वीडियोस दे दो, मेरे को इसका वीडियो दे दो, मेरे को उसका वीडियो दे दो. 15,000 वीडियो अवेलेबल है, तुम 15,000 वीडियो भी ले लो. लेकिन अगर अभी तुम उसमें टाइम बर्बाद कर रहे, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू वट एवर यू हैव एक्सेस टू, जिस भी चीज का आपके पास एक्सेस है, टेक अप वन मटेरियल, उसके अंदर से थोड़ा 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 सामान करना है. एडिशनली अभी बेसिक बिल्डिंग में एक और कॉम्प्रोमाइज दैट यू वुड हैव टू डू इज, यू पिक अप ए क्वेश्चन, इफ यू सॉल्व इट, इफ यू डोंट सॉल्व इट, तब इसके ऊपर ना हंग अप नहीं रहना है. I'm a very strong advocate of struggling with questions, very, very strong advocate of struggling with questions. But then that is only valid when you have the luxury of time. Now that you don't have the luxury of time, people who are preparing, who have started preparation slightly later, आपको ये काम करना है. थोड़ी देर देखा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देखो, लर्निंग नोट करो और आगे बढ़ो. You don't have the luxury of struggling with questions, and this is where your preparation will suffer the most. People who have struggled would have come up with their own insights. People who are not going to struggle because you have limited time, you are going to be exposed to insights of other people. And while those insights are still awesome, because those insights are not yours, those insights are not something that you have come up with, the likelihood of you missing out on them over an extended period of time is quite high. But then that is the hand we've been dealt with. We will work with it. अभी का प्लान आपका यही रहना चाहिए. कोशिश करो सितंबर एंड तक आपने क्वांट के सारे टॉपिक कर लिए. आप DILR के अंदर there are certain topics, let's say set theory, games and tournament, and liar puzzles. मेरा राइटिंग पैड क्यों नहीं चल रहा भाई ढंग से. लायर पजल्स, एंड देन tables and graphs और कुछ है, network diagrams. These are all topics which have certain amount of theory in them. थोड़ा सा आपको theory पढ़ना पड़ता है इनके अंदर. So make sure that the theory portion of this is covered and you've attempted at least, let's say, बहुत ही मिनिमल बता रहे हैं, 8 to 10 sets for them. 8 to 10 sets आपने कवर कर दिए. क्वांट के अंदर you have covered the theory of them, and per topic, the 5 topics that you have, आपने उनके हर किसी के कम से कम 100
questions, 100 questions, cumulatively 100 questions per area. When I say per area, I mean number system and arithmetic and algebra and geometry and modern math. आपने 100 questions per area कर दिए. Similarly, आरसी के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम आपने 60-70 आरसी अटेम्प्ट कर दिए. 60-70 आरसीज आपने अलग से अटेम्प्ट कर दिए और वीए के कम से कम 25 क्वेश्चंस ईच ऑफ ईच वेरिएशन आपने कवर कर दिए. वंस यू आर डन विद दिस एंड कीप अ टारगेट कि अभी सितंबर एंड तक अपने को ये सब काम खत्म करना है. कम से कम सितंबर एंड तक ये सब काम खत्म करना है. इसके बाद जंप ओवर टू मॉक्स. Please do not take mocks before you are adequately prepared and have adequately solved questions. This is like the bare minimum. इतना भी नहीं करा और उसके बाद mocks देने जा रहे हो. Most likely the score that you will get will not be satisfactory. And then again you will be running around on different groups asking for कोई एक strategy बता दो अपनी. यार strategy. When you ask for a strategy for solving a section or solving a paper, essentially what you are saying is एफर्ट नहीं करी है बट कोई एक तरीका बता दो जिससे नंबर आ जाए. एंड इफ समथिंग ऑफ दैट नेचर एग्जिस्टेड, डोंट यू थिंक इट वुड बी समथिंग दैट एवरीवन वुड बी डूइंग? अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता तो देयर इज नो स्ट्रैटेजी, और इन अदर वर्ड्स the strategy that you're seeking resides within you, and it will not be available to you by asking about it on other groups. You would have to take it out of you with some amount of detailed testing. Again, regardless of however many tests you take, please ensure you definitely analyze your tests very well. If you don't analyze your tests, when I say analyze, I mean ये टेस्ट में आपने अपनी गलतियां पकड़ी, आपने अपनी टेंडेंसीज पकड़ी, अगली टेस्ट में गलतियां नहीं रिपीट करने दी. Additionally, quant or DILR specifically, if at all these questions come in front of you later at any point in up until cat में भी any of these questions come in front of you up till in cat, you would be able to solve it. There should not be a question that remains unsolvable या non recognizable or uncrackable if it has come before you earlier and now it is coming before you again in cat. ऐसा हालत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट मीन्स फिर मॉक लेने का कोई फायदा भी नहीं हुआ. अभी जो हम अपने रिड्यूस्ड मॉक का काम कर रहे हैं, समझो इनिशियल एनालिसिस करने में पर मॉक आपको कुछ नहीं तो 8-9 आवर्स लगेगा पर मॉक. But then when you start getting the hang of it, that time will reduce to 6 hours, that time will reduce to 4 hours, and then if at all, achha, that is assuming you put in the effort, you keep going, eventually it will average out at 4 hours per mock ka 4 hours. 10 से 12 mock is good enough अगर कवरेज खत्म नहीं हो रही. अगर अक्टूबर में भी लेट्स से सितंबर एंड तक आपने ये काम खत्म कर दिया, अक्टूबर के पर वीक में आपने 2-2 मॉक दे दिए और नवंबर के पहले वीक में आपने 2-2 मॉक दे दिए, तो इफेक्टिवली 6 वीक्स 2 मॉक्स पर वीक 12 मॉक्स तक पहुंच जाएंगे. यहाँ पे अच्छा, मॉक देने की होड़ में ये मत करना आज सुबह उठ के एक मॉक दिया है, कल सुबह उठ के एक मॉक दिया है, तीसरी सुबह उठ के एक मॉक दिया है. वो लेवल ऑफ टेकिंग 1 मॉक पर डे, it is only, let's say, good for those people. It is only good for those people who are already at a very elevated level. मतलब humble brag, हम ये करेंगे तो फिर भी हम झेल सकते हैं. I will draw some positive insights from it. I will draw some takeaways from those tests. If I take 1 mock per day, हम फिर भी कुछ कर सकते हैं. हम एक मॉक के बाद और कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं. मेरे पास जिंदगी में और कोई काम है नहीं. I have no social life. I have nothing to look forward to. I only take tests. But then that would definitely not be recommended for somebody who is starting the preparation late, is fairly light on their basics, and then नहीं हम mocks बहुत सारे दे देंगे. So I'm sure this is a common statement that you've heard from a lot of people कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मतलब इतने mocks देने ही चाहिए. हाँ, but then that is for an average candidate, not for people who have started extremely late. This is the first tier for people who started fairly late, August, September में चालू करने वाले लोग. अच्छा, the second level that I'm talking of is for people who are consistently getting their CAT percentiles in this range.
70 to 85 परसेंटाइल, इस रेंज में जो लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग फेयरली गुड परसेंटाइल इन अ मॉक टेस्ट सीरीज। एक तो इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अगर करना चाहोगे, लेट्स से पॉपुलर टेस्ट सीरीज में 14,000 लोग थे, उसके अंदर आपकी रैंक अभी, अच्छा ये जो 14,000 लोग दे रहे हैं टेस्ट, इस 14,000 लोगों में से ना इज्जत से देर विल बी 2 to 3,000 एक्सट्रीमली सीरियस कैंडिडेट्स। उसके बाद मस्ती वाले कैंडिडेट्स ही हैं जो बस मॉक है तो मॉक दे देते हैं। सो इफ यू गेटिंग 70 to 85 percentile, your current rank is somewhere between 4,200 to 2,100। जब आप कैट देने जाएंगे, दिस नंबर गेट्स एक्सट्रापोलेटेड टू लेट्स से 1,96,000 अगर कर दें, this seems like it is getting multiplied by 14। this seems like it is getting multiplied by 14। रैंक्स डोंट गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, क्योंकि कैट देने के लिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं। These talented people push our percentile up significantly. There are going to be people, all those people that you find on groups, I'm selling my IMS account, I'm selling my time account, I'm selling my CL account। एक तो होते हैं स्कैमस्टर्स और दूसरे लोग होते हैं भगवान। These people are भगवान क्योंकि ये लोग अपना अकाउंट तो बेच देंगे, ये जो भी करेंगे अपने अकाउंट के साथ। These people will definitely turn up for cat। और चूंकि ये लोग कैट देने आते हैं, ये हमारी परसेंटाइल बूस्ट कर देते हैं। द जंप हियर वर्स्ट केस में भी it would be twice or thrice, so you'll end up somewhere, worst case scenario mein you'll end up somewhere around 7 to 8,000, 8,000 range mein। That is assuming you perform as creditably as you're performing in the mocks right now, so your overall percentile should be somewhere upwards of 90 प्लस परसेंटाइल टाइप आपका बन जाएगा। I don't know why this pen is not working as effectively. Let me work with another pen. Let's see if that works better. Okay. Okay. 90 प्लस परसेंटाइल वाली हालत आ जाएगी आपकी। So if these people, you have a pathway to 90 percentile based on the current numbers that you're getting। You have a pathway to 90 percentile based on the current numbers that you're getting। इतना कुछ difficult नहीं होना चाहिए। Your focus in the upcoming 2-ish months, I call it 2-ish months क्योंकि मेरे हिसाब से नवंबर में ज्यादा पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, फालतू का सर दर्द रहता है। बट इन द अपकमिंग 2-ish months, your focus has to be divide your tests into two parts, the sectionals and the mocks that you take, divide them into two categories। One are where the focus is mock score, or this is not working either, go away, go away, mock score, and the other one is testing। What I mean by testing is, see, whenever we take a test, we are extremely fond of यार मेरे कितने मार्क्स आए, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मेरा ये सही हो रहा है कि नहीं, मेरा वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, करो, टेक अ टेस्ट विद दिस इंटेंट, चलेगा, बिल्कुल डालो। बट इन द सेम वीक take another test in which you try something that you don't usually do। You try something that you don't usually do, stuff like हम DILR के अंदर, द सेट दैट, जो सेट लंबा है उसको हम पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। या लेट्स से आरसी के अंदर, इवन इफ आई एम नॉट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द पैसेज बेंट, हम फिर भी इसके अंदर अटेम्प्ट मार ही देंगे। क्वांट के अंदर एक टेस्ट के अंदर हम गेसेस भी मारना चालू कर रहे हैं, जस्ट टू सी हाउ इफेक्टिव आर माई गेसेस, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स इन क्वांट वेर यू आर 70% श्योर कि इन चारों में से ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। चलो, अगर दो जो बच गए, इवन नंबर आंसर होना चाहिए, एंड देर आर टू ऑप्शंस दैट आर इवन, चलो मार देते हैं उसके अंदर। ट्राई दोज वंडरफुल वेज, ट्राई दोज वंडरफुल थिंग्स अक्रॉस सेक्शंस and see what works for you। Basically, for a lot of people in the 70 to 85 percentile range, 70 to 85 percentile range, it basically translates into, right now
you have either there is a lack of knowledge which cannot really be fixed. अब मेहनती है, you can do all the practice in the world. इज्जत से आपको practice करनी है वो भी बताएंगे. But in terms of testing right now, there are lots of people in the 70 to 85 percentile range whose whose testing methods have not really been optimized. जिस तरीके से आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, द वे यू आर डूइंग इट, बेसिकली देर इज अ मॉक जिसके अंदर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू वुड गो फॉर योर ट्राइड एंड टेस्टेड वेज. देन इन सम अदर मॉक्स और सेक्शनल्स वट एवर यू चूज टू परस्यू, उसके अंदर try things that you don't usually do and see if across 3 to 4 tests, एक बार किसी चीज से अगर सक्सेस मिल गई, दैट इज नॉट अ वैलिड रिजल्ट. ट्राई इट मल्टीपल टाइम्स. अगर उसमें दिख रहा है कि हाँ यार, इससे मेरा स्कोर बढ़ता है या इससे मेरा रिजल्ट्स दैट आई एम गेटिंग आर बेटर, और ऐसा करने से मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो जाता है, इवन इफ यू गेट अ बैड स्कोर इन द टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन टेस्ट, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. क्योंकि पता है, a lot of people on cat day, all मोहम्मद अली का डायलॉग था कि माइक टाइसन का डायलॉग था, आई थिंक अली का ही था, एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल यू गेट पंच्ड इन द फेस. जब कैट देने बैठते ना, सो मेनी पीपल हैव सो मेनी स्ट्रेटजीज, पहले ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, राउंड 1 लगाएंगे, राउंड 2 लगाएंगे, बट जब कैट देना चालू करते हैं और फिर पसीने छूटने चालू होते हैं, देन दे रिवर्ट टू सामने सवाल आया, चलो चलो लिख लेते हैं, चलो कैलकुलेटर लगा लेते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं. सो if at all you're going to go down a different path on the D-Day, at least you know this path has given me tremendously bad results. So let me not do it right now. Let me at least move away from it. कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक अच्छी यूपीएससी की मैगजीन रहती है, यूपीएससी की क्या मैगजीन रहती है, जिसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स एंड न्यूज एंड एवरीथिंग. उसमें ना इंटरव्यू सेशंस अब तो पता नहीं कैसे आते हैं. हम बचपन में हमारे घर में आती थी, तो उसमें हम पढ़ते थे. There were two kinds of mock interviews that was written there. One was the good type, बंदे सवाल पूछा, बंदा बड़ा अच्छा आंसर करता था. The second one was a bad mock interview. उसका भी एग्जांपल, उससे कुछ पूछा, उसने कुछ एटीट्यूड में जवाब वगैरह दे दिया, and that was equally insightful. If somebody is asking you about XYZ and then you tell them about ABC without answering XYZ, that is also insightful. So in the testing, you will not only identify what works for you will also identify what doesn't work for you, and then work with that and then identify कि हाँ भाई, फ्यूचर में जब मॉक वॉक देंगे तो नहीं काम चलेगा. एडिशनली आपके लिए एक और प्यारा पोर्शन रहेगा, प्रैक्टिस. A lot of people in this range also have certain blind spots कि ये टॉपिक तो करना ही नहीं है मेरे को, ये टॉपिक तो हो ही नहीं सकता, ये टॉपिक तो कर ही नहीं सकते. 2 महीने बचे हैं. Please, nobody expects you to turn into experts in those topics, but at least you can make sure that you're covering the basics of that topics. And what I'm referring to here is specifically this topic. There is undeserved क्या बताएं, अवॉइडेंस ऑफ पीएनसी. पीएनसी छोड़ना मत जनता, प्लीज पीएनसी छोड़ना मत. एडिशनली बेस सिस्टम, इसके अलावा एक है बढ़िया टॉपिक, बेस सिस्टम, ये भी मत छोड़ना. इसके अलावा एक अच्छा टॉपिक कौन सा, मॉड की ग्राफिंग, ये भी मत छोड़ना. डू नॉट लीव टॉपिक्स ऑल टुगेदर बिकॉज समबडी सेड ना ना ये तो जरूरी नहीं है. लर्न देम, मेक श्योर दैट यू नो देम. क्योंकि पीएनसी के अंदर समझो, पीएनसी के अंदर 2-3 सवाल आएंगे क्वांट में, बेस्ट केस सिनारियो में 2-3 सवाल आएंगे क्वांट में. बट हिस्टोरिकली देर हैव बीन एंटायर डीआईएलआर सेट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड अराउंड पीएनसी. And if you're lacking in that skill, you're effectively saying, while other people are competing out of 20 questions, I'm competing out of 14. Why do you want to limit yourself? And it's not like nobody expects you to turn into an expert in PNC कि भाई साहब अलग ही दुनिया पलट रखी है आपने, 7C2 and 8P4 and 9C4 ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें बोलने लग जाओ, उतना नहीं, बट बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए. लेट्स से इफ आई गिव यू A B C D E और इसके अंदर
this is the password of some place, and I know I can have at most two pairs. I can have at most two pairs that have swapped positions with each other, and the password would still work. अगर two pairs निकालने हैं, how many pairs are available? 5C2 pairs. But 5C2 pairs is not valid here. 5C2 is not valid here because 5C2 would also have AB and AE. ये दोनों pairs होंगे. If there are two pairs that have swapped places with each other, they cannot possibly have A and A both included. तो यहाँ पे काउंटिंग करने के लिए ये सस्ता काम. ए बी अगर ले लिया, अगर एक ए बी फिक्स कर दिया है, तो अब सी डी हो सकता है या सीई हो सकता है या डीई हो सकता है. मेकिंग लिस्ट्स लाइक दिस, मेकिंग स्मॉल लिटिल लिस्ट्स लाइक दिस, इतना तो कर लो. नंबर काउंटिंग का केस एक एनमैट में हर साल एक सवाल आता ही है, समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ इफ यू हैव डिजिट्स 3 4 5 and 7, what we and you have to make a 4-digit number, what will be the sum of all the 4-digit numbers that can be made. This is such a giveaway question. हर किसी को पता है इसका काम, इसका लॉजिक तो समझ ही लो. एनमैट के अंदर ये आएगा, लेट्स से कैट के अंदर ना उन्होंने घुमा फिरा के ये कर दिया, 5-digit नंबर बनाना है और 0 भी दे दिया. अब इसके अंदर क्या लॉजिक रहेगा, इतना समझ जाओ, योर लाइफ इज मोर देन सॉर्टेड. नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू टर्न इनटू अ पीएनसी सवांट, बट एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी फेयरली कंफर्टेबल विथ पीएनसी के बेसिक सवाल. यही समझो, पीएनसी के दो बेस, पीएनसी के सवाल क्वांट के अंदर भी स्पेशली, दे आर एक्सट्रीमली बेसिक. दे आर नेवर एवर मतलब जितना टफ मॉक में आता है ना पीएनसी, उससे बहुत सस्ता कैट में आता है, एक्सट्रीमली सस्ता. कैट के अंदर ऐसी ऐसी बातें आती है, मतलब देख के लगता है यार कैट वाले तुम बच्चे क्या कुछ पढ़ गए पीएनसी में, और कैट वाले पूछ क्या रहे हैं. तो फिर एटलीस्ट बी कंफर्टेबल विथ बेस लेवल पीएनसी, एटलीस्ट बी कंफर्टेबल विथ absolute fundamentals of base system. If I tell you कि भाई 3 4 5 5 and 6 4 3 is getting multiplied and the unit digit is 1. Unit digit is 1. अभी आपको तुरंत, if these two numbers are getting multiplied and the unit digit is 1, instantly you should know the base is possibly 7 or 14. अगर ये भी नहीं आता अभी, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज बेस सिस्टम के ऊपर भी DILR सेट बन के आया हुआ है, नॉट इन द रिसेंट पास्ट, समटाइम अर्ली 2000, 2004 2005 में कभी आया था, बट बेस सिस्टम के ऊपर भी DILR सेट आया. प्लीज, हम लोग अपना मॉक स्कोर टेस्टिंग का काम तो करेंगे ही, इन द प्रैक्टिस अपना प्रैक्टिस भी करेंगे खूब सारा, बट प्लीज डू नॉट लीव अ टॉपिक अलोन because you feel queasy about it. If you feel queasy about it, then when you get a score which is not in line with your expectation, then don't feel queasy about it. मतलब वही हालत है अपने जिमिंग का, जो हम जिमिंग या एक्सरसाइज का एग्जांपल देते हैं, हम खाना खाना कम नहीं करेंगे, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में कंप्लेन करें यार वेट नहीं कम हो रहा है, तब फिर अनफेयर है ना. This is the advice for 70 to 85 percentile range wale people. See, these numbers are not set in stone. If you feel the advice that is given on this page is more applicable to you, ठीक है कर लेना, because I'm sure there are going to be some people who started in August, September and are within this range as well. कुछ लोग होंगे जो बहुत देरी से चालू करने के बाद इस रेंज में चल रहे होंगे. Good for you. But my expectation is when I see 70 to 85 percentile people, I'm referring to people who've started some time back, जिनका भी कोर्स कवरेज करने में एफर्ट नहीं है, बट टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है. दोज पीपल आई एम रिफरिंग हियर. जिनका कोर्स कवरेज बाकी है, दोज वर रेफर्ड टू इन द अर्लियर पेज. द थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, 90+ परसेंटाइल वाले लोग, आपके लिए बहुत सस्ती एडवाइस यही है. देखो, हर साल यू वुड हियर ऑफ हॉरर स्टोरीज ऑफ पीपल who were scoring extremely well in mocks, but in actual cat they did not perform as creditably. तो उनके साथ यूजुअली हालत ये रहती है, they fall in love with one section or they become extremely proficient in one skill,
at the cost of the other two skills. I'm sure if you're getting 90 plus percentile, there would be a section that you're extremely good at. कोई एक सेक्शन होगा जिसमें आप फोड़ रहे होंगे. प्लीज मेक श्योर आप बाकी दोनों सेक्शन में भी प्रोफिशिएंसी बढ़ाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रोफिशिएंसी इन द सेक्शन दैट यू आर करेंटली गुड एट. सो let there not be an extremely weak section. Let there not be an extremely weak section because I remember last year एक बच्चा था in quant he had 50, in DILR he had 35, in English he had a single digit score जिसके चक्कर में उसका ओवरऑल स्कोर वाज अराउंड 90. he got 98ish percentile but of course he had to prepare for CAT all over again क्योंकि VAR से डूब गया था. This year the kid is putting in a lot of effort for VARC. भगवान करे इस साल निकल जाए. But last year clearly there was a lack of effort क्योंकि we are humans who seek instant glory and instant gratification. ऐसा रहता था ना in your school also. याद है whatever your favorite subject was, you liked studying it. Because you studied it, you got more marks in it. And because you got more marks in it, it was your favorite subject. And because it was your favorite subject, you liked studying it. Because you studied it, you got more marks in it. काफी circular reasoning बना देते हैं. So please ensure करिएगा, you people, at least right now 90 plus वाली जनता, आप please ये ensure करिएगा, the areas that you are not very comfortable with, the areas that you are not extremely मतलब जिसके अंदर आपकी बहुत हाई प्रोफिशिएंसी नहीं हो रखी उसके अंदर थोड़ा प्रैक्टिस करना है. Additionally, if you're getting 90 percentile plus in the mocks right now, you have pretty much identified what works for you in terms of test taking, and you have identified what doesn't work for you in test taking. Now, if you only have mocks of one institute, what I would recommend is hunt down websites that offer free mocks. बहुत सारी जगहों पे फ्री मॉक्स फ्री सेक्शनल्स वगैरह चलता है. हम भी देते हैं क्यूए के फ्री सेक्शनल्स अगर देखने का मन हो तो hunt down websites that offer free mocks and everything. और आप अलग अलग सेटअप्स पे जाके देखिए. आई वुड नॉट रेकमेंड स्विचिंग मतलब दोस्तों के साथ शेयर करने वाला काम क्योंकि आईपी एड्रेसेस ट्रैक होने का पता नहीं क्या क्या काम रहता है. सो लेकिन देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स जहां पर फ्री मॉक्स अवेलेबल है. इनफैक्ट IMS टाइम CL वहां पे भी जब आप अकाउंट बनाते हैं यू डू गेट एक्सेस टू सर्टेन number of free mocks and free tests and everything. So if possible, if you're enrolled in time, तो आप IMS पे एक अकाउंट बनाइए, वहां पे जो फ्री मॉक मिल रहा है वो दीजिए, या आप क्रैक्यू पे जाइए वहां पे कुछ फ्री मॉक होगा वो दीजिए. थोड़ा सा सिस्टम को शॉक लगेगा. इफ यू आर ओनली अकस्टम टू टेकिंग मॉक्स फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट, सिस्टम को शॉक लगेगा. एंड दैट शॉक इज ऑल्सो नाइस क्योंकि कैट जब आप देने जाएंगे द सेम सॉर्ट ऑफ शॉक यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन द एक्चुअल एग्जाम. क्योंकि वो इंस्टीट्यूट वाले तो बना नहीं रहे. इंस्टीट्यूट वालों का एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच रहता है. मतलब फ्लेवर ऑफ द मॉक रिमेन्स फेयरली ब्लैंड. टाइम वालों के मॉक के अंदर देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, IMS वालों के मॉक के अंदर देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. And when you go to some other mock, when you try solving questions of some other mock, that flavor or the setup that you have gotten used to is no longer applicable, and therefore it is beneficial for you if you end up experiencing different mocks ऐसे टाइप का. टाइम CL IMS एंड और क्रैक क्यू और भी बहुत सारे फ्री मॉक्स हैं. टेस्ट फंडा के भी कुछ कुछ फ्री मॉक्स हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे हैं. ऑल ऑफ दीज मॉक्स एग्जिस्ट, दे आर ऑसम. कोई भी मॉक जाके दीजिएगा, स्कोर्स से मतलब मत रखिए. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. देर विल बी डेज ऑन विच यू विल परफॉर्म पुअरली. फॉरगिव योरसेल्फ. देर विल बी डेज ऑन विच यू परफॉर्म पुअरली. अच्छा, there are also going to be people whose scores are fluctuating within the 90 percentile range itself. इससे ज्यादा दुखी मत होना. अगर 90 के ऊपर कंसिस्टेंटली आ रहा है तो फिर स्किल मिसिंग नहीं है, तब डे की बात हो गई. और डे के ऊपर ऐसे भी मैनेज कर नहीं सकते. ये नहीं कर सकते कि भाई नहीं आज तो मेरा डे रहेगा ही. फॉर यू people who are in this range 90 plus percentile range, you are at a very very good level right now. Now it may not necessarily be, let's say somebody is getting 92 and they're general engineer male और उनको लाना 99.6 है, तो भाई हाँ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. आपको पिछले वाले पेज के जो एडवाइसेस थी, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना और काम एक्स्ट्रा करना है, ये सब करना पड़ेगा. बट
people who are already getting 90 percentile plus have covered all the basics altogether, don't have blind spots really. They know about all topics. हर किसी का basic आपने cover कर रखा है. Right now, ideally for you, the target has to be at least 2 mocks or 1 mock plus 1 sectional of each area. 1 sectional of each area. ये आपको हर वीक में करना ही करना है. Additionally, in order to get your juices flowing, in order to get your brain operating at मतलब brain operating at optimum levels, ऐसा करने का कोशिश करना चालू कर देना. स्टार्ट वर्किंग विद द आइडिया कि क्या बताएं, as soon as the mock is over, if it is possible, as soon as the mock is over, उसी टाइम पे एनालिसिस करने बैठ जाना. एंड दिस इज नॉट जस्ट वैलिड फॉर दीज पीपल हियर. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव इश्यूज विद स्टैमिना, कि भाई क्वांट का सेक्शन आते आते एकदम फटीग हो जाता है, फिर नहीं हो रहा है. रिकमेंडेशन यही है, एज सून एज द मॉक इज ओवर, उसके तुरंत बाद एनालिसिस करनी है. क्योंकि एनालिसिस करने में 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे. 90 परसेंटाइल वाली हालत पे पहुंच गए तो 4 घंटे मान के चल रहे हैं. बेस्ट के सिनारियो में 4 घंटे लगेंगे. So if you're taking a 2 hour mock followed by a 4 hour analysis session and you're dedicatedly sitting for 6 hours without distracting yourself with YouTube, without distracting yourself with Snapchat, without distracting yourself with whatever other distractions you can potentially have, आपको अगर 6 घंटे बैठने की आदत लग गई, 6 घंटे बैठने की आदत लग गई, तो फिर दूसरे घंटे के एंड पे तो डेफिनेटली फटीग नहीं आएगा. एंड दिस आइडिया इज ट्राइड एंड टेस्टेड. इट स्टेम्स फ्रॉम दैट टाइम जब कैट 3 घंटे का हुआ करता था, कैट 2019 तक. फ्रॉम कैट 2015 टू कैट 2019 फॉर 5 years वी हैड 3 hour कैट का पैटर्न. इतना अच्छा रहता था. 3 घंटे बैठना पड़ता था, 60-60 मिनट्स के सेक्शन होते थे. काफ उस 3 घंटे में समझो, अगर अभी आपको 2 घंटे में फटीग लग रहा है तो उस 3 घंटे में तो ज्यादा ही फटीग लगता था लोगों को. और उस टाइम पे इवन इफ अभी आपको बोल रहे 4 घंटे की एनालिसिस लग रही है, उनको 6 घंटे लगता था, क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस भी ज्यादा होते थे. डीआईएलआर के अंदर 8 सेट होते थे एक मॉक के अंदर. अभी तो डीआईएलआर के अंदर 4 सेट होते हैं, 6-6-4-4. ये 6 क्वेश्चन सेटर बना के डीआईएलआर के अंदर जिंदगी अच्छी कर दी है. वरना पुराने जमाने में 32 क्वेश्चन होते थे डीएलआर के, 8 सेट्स ऑफ 4-4 क्वेश्चन. अब 8 सेट के ऊपर प्रोफिशिएंसी अगर बनानी तो टाइम ज्यादा लगता था, एंड दैट वाज ओके. आप लोग प्लीज टेस्ट के तुरंत बाद हो सके तो एनालिसिस करने बैठे. डू नॉट डिले इट बाय 1 day, डू नॉट डिले इट बाय 2 days. अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मेरे को नींद आ रही है, तो फिर उस टाइम पे मॉक नहीं देना है. अगर मॉक देने की हालत आ गई तो उसके तुरंत बाद क्या कहते हैं, उसके तुरंत बाद आपको आइडियली एनालाइज करना चाहिए. अच्छा, ये 90+ परसेंटाइल वाले लोगों को एक और क्या बताएं. Find people who are serious about cat. One of the best ways to revise, one of the best ways to revise for cat is find people who are serious about cat, are are around your percentile or higher than you. मतलब around your percentile and higher than you. Make groups, 3-4 लोगों का group, serious, not people who are getting scores alone. Make a group of 3-4 people who are serious, and then hold क्या क्या बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं कम्युनिटी रिवीजन सेशंस. व्हाट आई मीन बाय कम्युनिटी रिवीजन सेशंस इज, आप लोग ऐसा करिए, लेट्स से मी एंड राम एंड श्याम एंड दीपक, 4 of us आई मेड अ ग्रुप. ठीक है, अब हम लोग कम्युनिटी रिवीजन सेशन करेंगे. इसका मतलब है आई विल, जहां से भी हमने अपनी पढ़ाई करी होगी या जहां से भी हमने अपने नोट्स बनाए होंगे, हम अपने नोट्स फेयर आउट करेंगे. और हम आएंगे एक जूम मीटिंग या वट एवर सेटअप, इफ यू हैव अ फिजिकल सेट ऑफ फ्रेंड्स जिसे आप फिजिकली मिल सकते हैं, जूम मीटिंग करेंगे या फिजिकल सेट ऑफ फ्रेंड्स. आई विल लिस्ट आउट इस टॉपिक के अंदर ये बात थी, 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 ये बात थी.
Basically, I will go through the list of things that I know about that topic. And I will definitely include all actionable insights. Actionable insights. I will not limit it only to theoretical points. Let's say in geometry. Let's say in geometry, if I there is an actionable insight or something that is useful. If I have an even-sided polygon, if I have an even-sided polygon within which a circle can be inscribed such that the circle is tangential to all the sides. देखिए conditions. Even-sided polygon, circle can be inscribed and the circle is tangential to all the sides. Then sum of alternate sides would be equal. मतलब समझिए ऐसा एक सर्कल है, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ऐसा कुछ बना दिया। फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल अगर बना रखा है, इट इज इंस्क्राइबिंग अ सर्कल. If this is side A, this is side B, this is side C, and this is side D, the insight is A plus C has to be equal to B plus D. This is on account of इस external point से अगर ये X है तो ये X है, इस point से अगर ये Y है तो ये Y है, अगर ये Z है तो ये Z है, अगर ये W है तो ये W है. A और C देखिए, X, Y, W, Z. B और D देखिए, X, Y, W, Z. This insight exists. So when you're doing your revision, you go through your theory, you also go through actionable insights like this. And then just because you are going through geometry notes, let's say I am going through geometry notes, I have been given the responsibility of compiling geometry notes. That does not mean the other people are not going to contribute. They are also going to prepare the geometry notes. And if at all they feel like कि भाई अच्छा यहाँ पे मुद्दा को चल सकता है कि ये वाला insight यहाँ पे लग जाएगा, which I don't know but other people know, we would do that. We would use that. पंगा यही है, ये एडवाइस जो हम पब्लिकली दे भी रहे हैं, इससे दिक्कत क्या होगी? इसके बाद निकलेंगे बड़े सारे धुरंधर, वो खोजेंगे अपने से तीन अकलमंद लोग, उनको बोलेंगे हाँ भाई तुम लोग अपने नोट्स वोट्स जो भी इंसाइट्स तुम्हें आते हैं आओ हम लोग डिस्कस करेंगे. हम आएंगे एकदम ही घटिया नोट्स, नथिंग. Don't beware of leeches. Beware of leeches who would want to initiate such a setup and utilize your knowledge and your insights and your efforts जब एंड ऑफर नथिंग इन रिटर्न. लीचेस से बच के रहना है, जिसके चक्कर में शुरुआत में बोल रहे थे फाइंड 3-4 serious candidates. The other person does not necessarily have to be an intelligent person, but he has to be a serious candidate who is willing to put in the effort. देखो, in the long run now, it doesn't matter आप अकलमंद है कि नहीं, it matters आपका attitude towards work ठीक है कि नहीं. Even when it comes to CAT, people who usually score well, apart from a very small minority of exceptionally gifted candidates, people who usually score well are the ones who have put in a lot of work. ऐसा चलते फिरते किसी का भी स्कोर नहीं आता. तो अगर कोई एक्सेप्शनली स्कोर वेल कर रहा है, अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, you would have to identify by conversation, you would have your own set of reliable people that you know, कैट वैट का अच्छे लोगों के साथ बैठो. ये community revision sessions is a great way to add to your already expanded knowledge base. The things that you know will be beneficial for all the other people in the group, and the things that they know will also get added to your knowledge base. बिल्कुल ये चाहिए. Of course, find people who are not very jealous, are not very competitive. ऐसा ना हो कि हम अपनी बात छुपा के रख लेते हैं, सामने वाले को बताएंगे नहीं और सामने वाला मेरे को सब कुछ बता देगा. ऐसे लोगों से बच के रहना. Basically find the right people, and it is not an easy method, it is not an easy way to do it. बहुत मेहनत लगती है खोजने में ऐसे अच्छे लोग, बट मिल जाते हैं अगर खोजेंगे तो. अच्छा, 90 परसेंटाइल पीपल, हफ्ते के 2 मॉक्स देने. डू नॉट tinker too much with your test taking habits. Do not tinker too much with your test taking habits. The tinkering part should be left alone to people who are in the 70 to 85 percentile range. अच्छा, I have deliberately left out the portion 85 to 90 वाली, 85 percentile to 90 वाले लोग, because those can potentially go down to the previous page or can go up to this page depending on wherever they choose to go. लेकिन 90 प्लस के ऊपर seal of approval है, 70 to 85 में seal of approval नहीं है. लेट स्टार्टर्स के लिए
extra काम है. Now if you're taking mocks and you're getting let's say 20-30 percentile right now, तब यही बोलेंगे, ये मान के चलो कि इस साल का कैट जुआ है, इस साल का कैट अपने गैम्बल करने जा रहे हैं. इफ वी गेट अ गुड स्कोर ग्रेट, इफ वी डोंट गेट अ गुड स्कोर दैट्स ऑल्सो फाइन. क्योंकि अगर अभी भी 20-30 परसेंटाइल आ रही है, अगर 20-30 परसेंटाइल आ रही है कैट में मॉक्स के अंदर, इसका दो कारण हो सकते हैं. या हम पढ़ाई नहीं कर रहे, या हमने टेस्ट देना बहुत जल्दी चालू कर दिया है एंड माई डिसीजन मेकिंग इज कॉम्प्रोमाइज देयर. इफ द डिसीजन मेकिंग इज कॉम्प्रोमाइज, एवरीथिंग एल्स इज fairly useless, whatever you're engaging in. With that, whatever three-tiered plan I had to share, whatever ideas I had, and all these ideas, all these things are stemming from my time as a candidate. जिस जमाने में हम हुआ करते थे, हम precisely यही सब काम कर रहे थे. You don't have to necessarily be a bookworm. You have to be resourceful, you have to be intelligent, and you have to be, क्या बताएं, present in the moment. Once you identify what works for you, once you identify what can work for you, and you pounce upon it with all the energy in the world, that leads you to the best possible outcome. That will be all for this episode. Hopefully you learned something. आ, एक हाँ प्लग इन भी, क्यूए के फ्री सेक्शनल्स हैं हमारी वेबसाइट पे, जनता आके देना. 4 सेक्शनल्स हो चुके हैं. पहले सेक्शनल पे 75 लोगों ने दिया, सेकंड सेक्शनल पे कुछ 58 लोगों ने दिया, थर्ड सेक्शनल कुछ 61 लोगों ने दिया, फोर्थ सेक्शनल कुछ 50-ish लोगों ने दिया. तो फिर बड़ा दुख होता है जब कम काउंट ऑफ लोग दे रहे हैं. टेस्ट आर नाइस. जो भी लोग देख रहे हैं प्रेपरेशन पार्ले, और तुम लोग क्यूए टेस्ट भी दे रहे हो, जो भी, अगर ठीक है तो नीचे कमेंट में बता देना, अगर नहीं ठीक है तो मत बताना या बुरा है तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं. बट बोल रहे हैं जितना ज्यादा टेस्ट दे सको, वेबसाइट पे फ्री क्यूए सेक्शनल टेस्ट चला रहे हैं, प्लीज आके दे लेना. देखो उससे मेरा कोई मार्केटिंग का फायदा हो नहीं रहा. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग एनी मोर. मेरे इस साल का सारा सेल हो चुका है. इट इज जस्ट दैट टेस्ट बनाने के बाद बहुत कम लोग जब देते हैं ना तो बहुत दुख होता है. ज्यादा लोग देंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई यूटिलाइज तो हो रहा है. इट्स लाइक इफ आई मेक एन अमेजिंगली गुड कारपेंट्री का सामान एंड देन somebody इज यूजिंग इट टू, मतलब सर्दी के दिनों में आग लगा के हाथ ताप रहा है, तो बहुत दुख हो जाएगा. वैसी वाली हालत है. प्लीज टेक दो टेस्ट. दैट विल बी ऑल. ओके बाय. हैव अ गुड टाइम.